Hello and welcome everyone to this series where we are going to discuss how you can read and interpret financial statements that have been prepared under IFRS. Okay, so IFRS is International Financial Reporting Standards, right? These are recognized internationally. We are going to see a practical version, the usage of IFRS. We are going to read out one of the annual report. Okay, we are going to decode how the financial statement looks like, what are the things in it, and the different IFRS applied at each step. And this is not just your regular exam level session. Okay, it is just to occupy with the real world scenario, right? Okay. So in this first session, we are going to start with IAS 1, that is presentation of financial statements. Okay. So before we do that, I would say that we are going to have multiple sessions coming on for this series. But if there is an ongoing interest, right, as I continue, I should see some interest around people. Okay. So it is necessary that I should be getting comments and likes for that. Okay. And firstly, because we are going to see an actual company's financial statements that have been prepared under it, and we are going to see one thing every one IFRS or IAS. Okay, with use a lot of examples to make it more practical. Okay, so let me introduce one company, that is Tesco PLC. Okay, Tesco PLC. We are going to decode its financial statement. Okay. So Tesco is a major retailer brand in UK. It was started in UK. It has now diversified into many businesses. That is Tesco Bank, Tesco Mobile, and many more businesses. Uh, okay, so Tesco PLC firstly started as a retail store or supermarket, as we say, but it is more global as we see DMart. Okay, it is something similar to DMart. The business is something similar to DMart, but they have online stores also, and they are globally present, okay, as compared to DMart, which we see in India only. So Tesco is a huge and old organization. It was formed in 1947, as I saw. Okay, so this was just a basic setup of the company. We would see many other companies going forward. Okay, if for example I want to pick a particular standard. Okay, so if a particular standard applies to a specific company, then I would pick that company. Okay, so firstly, we are going to discuss how you can extract any financial report or an annual report from the official annual report, okay, from company's house beta, okay. Okay, so company's house beta you can search out on Google, okay. It gives you all the information that you require for all the UK related businesses, okay. So here, when you come to this website after searching company's house beta, you have enter company name, number, or officer name. You can, if you know company number, okay, you can directly put it out. You can search by it. Okay, you can also type out the officer name. Okay, if you know the director name, okay, it will list out. It will list out all the companies that the director is in. Right. Okay. Now let me start with the company name Tesco. Okay, Tesco PLC. This is Tesco PLC. So you can see all the information here. Its registered office, company status, company type, and when it was incorporated, as I said, the nature of its business and its accounting period. So its last account were made recently, that is 26 Feb 2025. Okay, so Feb 2020. So February is the financial year end for it for this company. Okay, you can find out the filing history. You can see the changes in capital, cancellation of shares was done recently, the resolutions and all that information, the purchase of shares. What is important to us as of now is the group of companies account. Okay, you can filter out accounts here to find out the previous accounts that has been filed by the company here. So you can find out group of companies accounts made up to 26 Feb 2025. You can view PDF, you can download it. So I am just setting out base for this company as of now because
the next, maybe the video would be regarding IFRS 10, that is relating to consolidation. This financial statements are consolidated. That includes all the businesses of Tesco PLC, right? Okay. So you can download it out for a reference. You can explore Companies House beta by searching other companies and seeing their whole company's account. Okay. So this is prepared in accordance with IFRS, and we would see how all IFRS work. Okay, what are the IFRS that we need to refer to, right? Okay. Now we will continue with this annual report ahead in this series. Okay. Firstly, I want to discuss with you the first standard, that is International Accounting Standard. First International Accounting Standard IS1, that is presentation of financial statement. Now, what it says is, okay, it is one of the key accounting standard, international accounting standard. It sets out the requirement that you need. Okay, it sets out the requirement for the financial statements, like how should they structure, how should the structure look like? Okay, the minimum content and the general features that it should include. Okay, so IS1 says that you should ensure that the financial statement is comparable. So as if you see the financial statements of Tesco Limited, okay, as of now, I'm just scrolling throughout. Okay, here is the financial statement. It has also given its position, its balance sheet here for 2024. So what it says, it should be comparable. So as a shareholder, when I see this financial statement, I can understand in the previous year the company's balance sheet looked like this, and currently the position is this. Okay, so I can compare it. So this is what they want. Okay, you should also ensure that your financial statements could be compared with other entities. What are its components? So five things are there. First is SOFP. Okay. First is SOFP. SOFP is prepared as at date. It is prepared as at date. Okay. What is SOFP? Statement of financial position. Okay. It is similar to balance sheet. It is what we call balance sheet in India. So let's say my position, my current asset were $10 million in 2024. 2024, my current asset were this, and in now 2025 it is 12 million dollars. So what it signifies is that as at date I have 12 million. It is not like that 10 million is for 2024, 12 million is for 2025. It isn't. My overall assets has increased by 2 million. This is what it signifies. So keep in mind that SOFP is prepared as at date. Now when we go to next thing, I think first thing should be SOPL, or you say SOCI. Okay. Okay. So it provides you the choice. Okay. What you can do is either you can prepare SOPL and OCI, or you can prepare OCI. Okay. OCI only, right? So what is SOPL? SOPL is the normal profit and loss that you are generating from your businesses, and OCI is uh, it includes all the gains and losses that are not relating to your core businesses, right? It is, for example, you have a revaluation gain or loss. Okay, so that type of income and gains would be included in OCI, other comprehensive income. Now, these are prepared for the year ending. Okay, these are prepared for the year ending. So let's say my year end was 2024, where I earned 10 million as a profit. In 2024, I earned a profit of $10 million. And in 2025, I earned again $12 million, let's say. Okay. So what it signifies is that in 2024, my profitability was $10 million, while in 2025, it is 12 million. Okay. So it is standalone. It is standalone. It shows profit for the year ending. Okay. It shows all the financial. What it signifies is, just a second. It signifies financial performance of the company. Okay. What SOFP signifies is financial position. Financial position. This is what my position in 2025 looked like.
This is the performance of 2024. This is the performance of 2025. So you need to understand this difference between financial performance and position, SOPL and SOFP. Next is statement of changes in equity. So this includes all the changes in share capital, share premium, reserves. Okay. So whatever the things, whatever the adjustment are relating to equity part would be included in SOCE. Okay. Next is SOCF. Now, this is an important statement. Most of the stakeholders ignore this important statement. Okay. The thing is that SOCF is one of the most important statement. Okay. So let's say you generated profit of $12 million, right? It is not similar to 12 million of cash in your pocket. Are you understanding it? Are you understanding it? Let's say, let's say I sold goods worth 10,000. Okay. I sold goods worth 10,000. So it stands as my receivables in balance sheet and it shows sales. So my profit has been increased with this. Okay. But I sold it in credit. I have sold that in credit. So is cash coming in? No. Cash is coming in or not? No, right? So here this 10,000 would not be converted into cash, right, for that year, right? So PNL won't give you a true picture of what is the cash position. Like take for example one of the expense, that is depreciation expense. You deduct it from your PNL, but is it your cash expense? Is it your expense? Are you really spending it? No, it is just an accounting adjustment. Okay. So in cash flow, we adjust all the P&L items that are non-cash. Okay. We adjust all these things. Uh, in detail, we would see when we cover a financial statement, when we would read out one of the financial statement. Okay. So we will see what are the things included in it. But as of now, to give you an idea, it includes operating activity. So cash flow from operating activity, whatever the cash you are generating from your core businesses, from your operation would be included in operating activity. Next is financing activity. Financing activity includes everything regarding the, let's say you purchased bonds. Okay. Let's say you gave out dividend. Okay. That is financing activity. Another thing is you are reissuing a bond. Okay. You are reissuing a bond. You are paying back a bond. Okay. You are canceling your shares. Okay. You are buying back your shares. That is a part of financing activity. Investing, investing activity. Now you are earning interest from one of your investment that would be included in investing activities. Okay. The interest that you earn from bond. Correct. So what are the whatever the finance related things that bring you cash in or cash out, that would be included in financing activity, and investing is all relating to the investments you make. Okay, correct. Okay. Now let's move ahead. Let's move ahead. Certain key principles that you need to keep in mind. Okay. I think now you are clear with the SOCF. Okay, SOCF is so that you understand that 12 million profit is not equals to my 12 million of कैश फ्लो ओके सो ये जो 12 मिलियन मेरे पास आया है दैट इज नॉट कि मेरे पास 12 मिलियन गले में आया है ठीक है बिकॉज सी प्रॉफिट्स कैन बी मैनिपुलेटेड मैं डेप्रिसिएशन कुछ भी बता दूं मैं अपने हिसाब से कोई भी अकाउंटिंग पॉलिसीज यूज कर लूं है ना मैं एग्जेगरेट करूं चीजों को बट एट द एंड मेरे हाथ में पैसा कितना आ रहा है कैश कितना आ रहा है बिकॉज आगे जाके अगर मेरे को इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी लेट्स से आई वांट टू परचेज अ न्यू मशीनरी दिस वुड कम इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज ओके लेट्स से आई वांट टू परचेज अ न्यू मशीनरी मैं एज अ डायरेक्टर मैं ऐसा तो नहीं बोल सकता ना कि भाई मेरा तो प्रॉफिट हो रहा है इतना लाखों इतना करोड़ों का लाखों का प्रॉफिट हो रहा है सो आई कैन बाय मशीनरी इजीली राइट फॉर दैट यू नीड टू हैव कैश यू नीड टू हैव कैश ये जो प्रॉफिट है this won't buy you that machinery. You have to have cash,
Correct? So this is a significant statement that you need to look into. Next is accounting policies and explanatory notes. Accounting policies, you would describe the accounting policies that you have been using, and explanatory notes are like, let's say, there are multiple heads in financial statements in SOPL and SOFP and SOCI, whatever, all those financial statements. Okay. So we can't describe in financial statement we can't describe all the things in detail, so what we do is we write out note. Okay, we write out note. As you can see here, we have various notes, 11, 12, 13. These are the notes we would see in the later on pages, that what are these notes. Okay, what are these notes under which, let's say here, goodwill, we would go to 11th note. Okay, so it has described all the things about goodwill, all the details about the goodwill, right? So that is why notes are important part and are and you would see at the end after your financial statements, right? All right. Next is key principle. What are the key principles that you should keep in mind? Fair presentation. You should present those financial statements fairly. You also need to understand who prepares the financial statement. Who prepares the financial statements? So the financial statements are prepared by management, correct? Management prepares financial statements. Who uses it? Stakeholders. I would discuss with you all the stakeholders. Okay, I have listed out. I would discuss it with you. The stakeholders uses your information, uses the information that have been given in the financial statements by analyzing it. Okay, and then take their informed decisions, right? So, can shareholders directly trust on management? Can stakeholders trust on management? Because मैनेजमेंट डायरेक्टर जो है वो तो भाई ऐसा ही, बट अगर वो खुद की कंपनी मैनेज कर रहा है, आज मेरी खुद की कोई कंपनी है, तो आई वुड ऑलवेज ऑलवेज वांट टू शो अ ग्लूमी पिक्चर आउट हियर. आई वुड ऑलवेज वांट टू शो ग्लूमी पिक्चर टू माय स्टेक होल्डर्स कि भाई सब चंगा सी चल रहा है, सब चंगा सी चल रहा है, मैं अपनी जेब में सैलरी अच्छी खासी डाल रहा हूँ, ठीक है. तो स्टेक होल्डर, हाउ कैन दे ट्रस्ट द मैनेजमेंट? ओके, सो दैट इज व्हाई we have auditors who audit these financial statements that have been presented by management. Now, what do auditors? Okay, audit standards जो है वो काफी वो भी अलग से यहाँ पे डिफाइन किए गए हैं, एक अलग स्टैंडर्ड्स ओके इसके डिफाइन किए गए हैं ऑडिट के. बट टू बी प्रिसाइज, ऑडिट क्यों किया जाता है? ताकि हम आइडेंटिफाई कर पाए कि ये जो मैनेजमेंट ने रिपोर्ट तैयार की है वो करेक्टली प्रॉपर स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हुए की है. ओके, द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट. ठीक है, मिसस्टेटमेंट यहाँ पे कोई नहीं किया है. एंड दिस आर फ्री फ्रॉम फ्रॉड, रिस्क और एरर. ओके, दिस आर फ्री फ्रॉम fraud, risk or error, and there is an appropriate internal control being applied. So now ऑडिटर्स क्या करते हैं ना, वो एश्योर करते हैं स्टेक होल्डर्स को कि भाई ये जो बंदा कह रहा है ना वो बिल्कुल सही है. क्या करते हैं? वो ओपिनियन प्रोवाइड करते हैं. ठीक है, ओपिनियन प्रोवाइड. अब ये भी जो है ना, ये भी जो है गारंटीड एश्योरेंस कभी भी नहीं देते. इफ यू रीड आउट ऑडिट इन डिटेल वेन एवर यू गेट टाइम, ये भी गारंटीड एश्योरेंस नहीं देते, रीजनेबल एश्योरेंस देते हैं कि भाई मैं, मेरे को जहां तक लगता है, ठीक है, मैंने अच्छी तरह से सब चीजें पढ़ी है, ठीक है, मैं उस तरह का अब ओपिनियन देता हूँ कि ये रिपोर्ट जो है क्वालिफाइड है, अनक्वालिफाइड है, या जो भी है, ठीक है, मेरे हिसाब से ये ओपिनियन है. अब आगे जाके तो मेरा गला नहीं पकड़ सकता कि भाई कुछ हो गया. मैं रीजनेबल एश्योरेंस प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है, राइट. ओके, देखो भाई जीवन में कुछ भी 100% तो है नहीं. ठीक है, नेक्स्ट की प्रिंसिपल इज गोइंग कंसर्न. अब गोइंग कंसर्न क्या कहता है? गोइंग कंसर्न क्या कहता है कि भाई आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट इस तरह से प्रिपेयर कर रहे हो कि भाई जीवन में आगे जाके ये कंटिन्यू होने वाला है बिजनेस फॉर द अनफोर्सिएबल फ्यूचर. अब डेप्रिसिएशन क्या है? डेप्रिसिएशन क्या है? अब मैंने 50 मिलियन की 50,000 की, लेट से मैं 5,50,000 कुछ भी ले लो, मैंने मशीन ले ली, मैंने उसकी लाइफ गिनी कि भाई 20 साल चलेगी. ठीक है, 20 साल चलेगी, है ना. अब मैं क्यों इसको एस्टिमेट कर रहा हूँ? अब 20 साल किसने देखा है? ठीक है, तो बिजनेस इज बेस्ड ऑन द गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट. तभी मैं 20,000 डेप्रिशिएट कर रहा हूँ कि भाई आगे जाके भी ये मशीन मेरे को काम आएगी. आई वुड कंटिन्यू माई बिजनेस. ठीक है भाई, जीवन भर चलता रहेगा ये बिजनेस.
सो यू शुड कीप इन माइंड दिस प्रिंसिपल व्हेन प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। दूसरा है एक्रूअल बेसिस, दैट इज ऑल यू नो, कि भाई जब पैसा आ रहा है, when money is coming in or money is going out, you do not you are not using cash basis while preparing the financial statements, you are using accrual basis। इसका मतलब ये है कि जब ऑकर होते हैं ट्रांजेक्शन्स, ओके, सो इनकम एंड एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड व्हेन दे आर occurring, the transactions are recorded when they are occurring instead of the cash exchange in real, okay। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि अगर कैश स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो जो है, ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो वुड बी इक्वल टू एसओपीएल इफ यू यूज कैश बेसिस। कोई एडजस्टमेंट ही नहीं है ना, मेरे पास जेब में पैसा आ रहा है, ठीक है, मेरे पास जेब में पैसा आ रहा है जब मैं कुछ सेल कर रहा हूँ, ठीक है, और मेरा खर्चा हो रहा है, ठीक है, आई एम पेइंग बैक। सो एट द एंड जो कैश फ्लो आएगा दैट वुड बी इक्वल टू माई एसओपीएल। तो अकाउंटिंग में हम अक्रूवल बेसिस हमेशा यूज करते हैं। कंसिस्टेंसी ये है कि भाई हम जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो कंसिस्टेंट बेसिस पे प्रिपेयर करने चाहिए। जैसे कि भाई जो हमारे जो भी हमने अकाउंटिंग पॉलिसी यूज की है, एस्टिमेट यूज किया, दैट शुड बी कंसिस्टेंट, ओके। चेंज जो है भाई जरूरी मतलब हो सकता है कि देयर देयर माइट बी सर्टेन चेंज, बट इट शुड बी जस्टिफाइड। अब आज ऐसा नहीं हो सकता ना कि मैंने ये साल डिसाइड किया कि मेरे बिल्डिंग की वैल्यू जो है, मेरे मेरे बिल्डिंग की लाइफ जो है वो 20 साल है, कल उठ के मैं बोल रहा हूँ कि नहीं अब तो मुझे लग रहा है ये 50 साल चलेगी मशीन। ऐसा तो नहीं हो सकता ना। यू शुड बी कंसिस्टेंट इनफ। दूसरा है मटेरियलिटी एंड एग्रीगेशन। सो मटेरियल आइटम्स आपको सेपरेटली प्रेजेंट करनी पड़ेगी, ओके। अब मटेरियलिटी कैन बी डिफाइंड डिफरेंटली फॉर डिफरेंट बिजनेसेस, है ना। किसी के लिए ये बड़ी बात होती है कि भाई मेरा 10 बिलियन है, ठीक है, 10 बिलियन है, दैट इज ह्यूज अमाउंट, दैट इज द मटेरियल अमाउंट। अब उसका बिजनेस ही होगा, उसका मार्केट कैप ही 10,000 बिलियन या कुछ भी बोलो। मैं अंधाधुन नंबर ले रहा हूँ, मैं बिलियन में क्यों जा रहा हूँ, मैं मिलियन ले लेता हूँ, ठीक है, कुछ भी बोल दो, ठीक है। हियर इट इज जस्ट फॉर एग्जाम्पल, अभी कमेंट में मेरे को कुछ बोलना मत, ठीक है। सो इतना 10,000 मिलियन का है मेरा, लेट्स से 10,000 मिलियन का मेरा, मिलियन हटा ही देता हूँ भाई, आप लोगों को फिर हजम नहीं होगा, ठीक है। 10,000 रुपए, 10,000 रुपए, 10,000 रुपए मैं कमा रहा हूँ, ठीक है। उसमें से 1,000 जो है वो क्या मेरे लिए मटेरियल होगा क्या? नहीं, जरूर होगा ना भाई, होगा कि नहीं? मेरे पूरे टर्नओवर का 10% है, सो दैट शुड बी मटेरियल फॉर मी। अच्छा, अब इसकी जगह ये 1,000 है, बट मेरा जो बिजनेस है ना, अब ये जीरो अनलिमिटेड, ये 6-7 डाल देता हूँ मैं। अब इसकी जगह मेरा ये है 1,000 रुपए, अब इसमें से जा रहा है। अब क्या ये मुझे इम्पेक्ट कर रहा है? मोटा मोटा भाई की जेब से 100-200 रुपया निकल जाएगा, कुछ फर्क पड़ेगा उनकी नेटवर्थ को? कुछ फर्क पड़ेगा? हमारी जेब से निकलेगा, ओके, दैट यू वुड अंडरस्टैंड, ठीक है। अच्छा, एस्टिमेट, अगर एंटिटीज कुछ भी चेंज करती है अकाउंटिंग पॉलिसी या कुछ एरर करेक्ट करती है, सो दे शुड रीस्टेट दैट कंपेरेटिव इंफॉर्मेशन अलोंग विथ इट। नाउ अब ये भसड़ किसके लिए मची है, हम ये सब किसके लिए कर रहे हैं? ये स्टेक होल्डर्स के लिए कर रहे हैं, ठीक है। अब ये स्टेक होल्डर्स में क्या क्या आता है? स्टेक होल्डर्स में क्या क्या आता है? इन्वेस्टर्स और शेयर होल्डर्स है। अब टेस्को पीएलसी जो है ना, वो एक लिस्टेड कंपनी है। टेस्को पीएलसी जो है ना, वो एक लिस्टेड कंपनी है। आई वॉन्ट टू इन्वेस्ट इन इट शेयर्स, आई वॉन्ट टू इन्वेस्ट इन इट शेयर्स। क्या देखूंगा मैं? क्या देखूंगा? आई वुड सी इट्स बैलेंस शीट, इट्स पीएनएल। मुझे पता होना चाहिए कि भाई ये धंधा किस तरह से कर रहा है। कंपेरेटिव इन्फॉर्मेशन है, पिछले साल उसने कितना धंधा किया था, करंट ईयर में कितना कर रहा है, उसके मार्जिन क्या है, उसका ईपीएस क्या है, ठीक है, उस हिसाब से मार्केट उसको पीई देता है। सो दैट इज व्हाई आई नीड टू अंडरस्टैंड कि बिजनेस किस तरह से वर्क कर रहा है, ठीक है। और अगर मैं पैसा डाल रहा हूँ, एक अच्छा खासा पैसा डाल रहा हूँ, तो आई नीड टू रिसर्च इट, आई नीड टू गेट दिस इन्फॉर्मेशन। हाउ कैन आई पुट लैक्स ऑफ करोड़ ऑफ मनी जस्ट जस्ट कि मैनेजमेंट बोल रहा है कि भाई सब चंगासी है? नहीं भाई, मेरे को बताओ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बताओ तो सही, ठीक है, मेरे को बताओ तो सही कि तुम क्या कर रहे हो, करेक्ट। नेक्स्ट इज लेंडर्स। अब टेस्को लिमिटेड ने भाई किसी बैंक से पैसा उठा के रखा है उधार पे, ठीक है, पैसा उठा के रखा है। अब बैंक जो है ना, वो पैसा क्यों देगी? कोई तुमको पैसा क्यों देगा, है ना? व्हाई वुड बैंक गिव यू मनी? ठीक है, अब इट इज अर्निंग इंटरेस्ट, बट
यू शुड हैव रेलेवेंट क्रेडिट स्कोर, यू शुड हैव गुड क्रेडिट स्कोर। ठीक है, आई डोंट नो व्हाट, हाँ क्रेडिट स्कोर ही कहते हैं ना, ठीक है, क्रेडिट रेटिंग, क्रेडिट स्कोर आई थिंक इंडिविजुअल्स के लिए होता है, आई डोंट नो। ठीक है, तो आपका क्रेडिट वर्थिनेस होना चाहिए कि भाई ये आगे जाके मेरे को पैसा दे सकता है। अब मेरा बिजनेस अब मेरा बिजनेस 1 लाख का है हर साल, ठीक है, अब बिजनेस मेरा 1 लाख का है, घट हर हर साल जो है ना मेरा बिजनेस अभी घट रहा है, 50,000 हो गया, अब 10,000 हो गया, ठीक है, 10,000 हो गया। अब मेरा जो इंटरेस्ट ही है ना, मेरा हर महीने का इंटरेस्ट, हर साल का जो इंटरेस्ट है ना वो तो चेंज नहीं हो रहा है, ये 2,000 ही रह रहा है। तो बैंक क्या बोलेगी कि भाई तेरा धंधे धंधे की तो हालत खराब होने वाली है, तू मेरा पैसा देगा कि नहीं? आप कम से कम इंटरेस्ट भी नहीं निकाल पाओगे अगर इस तरह से चला तो आपका कंडीशन। सो बैंक वुड बी रियली इंटरेस्टेड इन सीइंग योर फाइनेंशियल पोजीशन। दूसरा है क्रेडिटर्स। अच्छा, कोई आपको उधार पे सामान क्यों देगा? ठीक है, ठीक है। अब टेस्को लिमिटेड काफी सारे जगह से यहाँ पे माल लेता होगा, ठीक है। इट वुड बी परचेसिंग, गुड्स फ्रॉम वेरियस सप्लायर्स, ठीक है। और यू वुड से दे वुड परचेज इन बल्क, ठीक है। ओके, तो मार्जिन उनका कम होता है, उनको बल्क में ही खेलना पड़ता है, रिटेल बिजनेसेस में मार्जिन कम रहता है। तो बड़े अमाउंट का हमको चाहिए, हमको सप्लाईज चाहिए, ठीक है। अब क्रेडिटर्स जो है ना, वो अभी के लिए हमको उधार पे दे रहे हैं, हमको दे रहे हैं 60 दिन का क्रेडिट पीरियड, ठीक है, 60 दिन का क्रेडिट पीरियड लेट से। अब क्रेडिटर्स क्या देख रहे हैं कि मेरे बिजनेस में है ना थोड़ा सा दिक्कत वाली बात है, ठीक है। अब मेरे बिजनेस में ना दिक्कत वाली बात है, अब जो मैं है ना पेमेंट 90 दिन ड्यू कर रहा हूँ, कोई कोई पेमेंट मेरी 120 दिन से बाकी है, ठीक है, कोई कोई पेमेंट मेरी 120 दिन से बाकी है। तो क्रेडिटर क्या करेगा, है ना, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जाके देखेगा, ही वुड सी कि व्हाट एग्जैक्ट इज योर प्रॉब्लम, कहाँ आप डिफिकल्टी फेस कर रहे हो, है ना, कहाँ आप डिफिकल्टी फेस कर रहे हो, क्या आपके पास कैश ही नहीं है, क्या आप बोरोइंग्स बढ़ाते जा रहे हो, ठीक है, बोरोइंग्स बढ़ाते जा रहे हो, पहले वालों को पैसों ही नहीं दे रहे हो, पैसा ही नहीं दे रहे हो, ठीक है, सॉरी, स्लिप ऑफ टंग, ठीक है। तो सप्लायर आगे जाके कॉशियस रहेगा कि भाई इसको माल सप्लाई नहीं करना मुझे, आगे जाके तो भाई बिजनेस आपका पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाएगा। आपका काम तो यही है ना, आपका मिडलमैन का काम है, आप मैन्युफैक्चर तो कर नहीं रहे हो, आप एक रिटेलर हो। सप्लायर से उठा के कस्टमर को देना, आप सप्लायर नाराज हो जाएगी तो कस्टमर को क्या दोगे? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके। दूसरे हैं एम्प्लॉयज, दूसरे क्या, चौथे, ऐसे काफी सारे स्टेक होल्डर्स है, ये जस्ट एक शॉर्ट लिस्ट है। एम्प्लॉयज जो है ना, दे आर वर्किंग विथ माई कंपनी, सो दे 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 नीड टू एंश्योर एटलीस्ट कि मेरा सैलरी तो निकल जाएगा ना, ये कंपनी मेरी सैलरी देने की तो uh, हैसियत रखती है ना। इट हैज द अमाउंट ऑफ मनी दैट इट कुड पे माई सैलरीज, माई वेजेस, करेक्ट। दूसरा है गवर्नमेंट और टैक्स अथॉरिटीज, है ना, तो हमारी थाली में से हिस्सा लेने गवर्नमेंट और टैक्स अथॉरिटीज आएगी, ठीक है, कि अगर प्रॉफिट बनाया है तो भाई मेरे को हिस्सा तो चाहिए, हिस्सा तो मांगता है मेरे को। तो गवर्नमेंट एंड टैक्स अथॉरिटीज वुड रियली बी इंटरेस्टेड। रेगुलेटर्स रेगुलेटर्स जो है वो इंटरेस्टेड रहेंगे कि भाई आप कुछ झोल तो नहीं कर रहे हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, क्योंकि बिकॉज यू आर ए कंपनी। ओके, अच्छा, यूके में अगर टेस्को का मार्केट शेयर देखोगे 28% के आसपास है, अगर रिटेल इसकी बात करें, रिटेल बिजनेस की 28% के पास, ठीक है। तो काफी सारी चीजें आपकी लिंक्ड है, आप सोसाइटी को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करते हो, आप कस्टमर्स को गुड्स प्रोवाइड करते हो, तो काफी सारी चीजें आपके जो इकोनॉमी है आपके ऊपर डिपेंडेंट है। तो रेगुलेटर्स को ये इंश्योर करना पड़ेगा कि आप कुछ सिस्टम में लूप होल नहीं निकाल रहे। जस्ट अ सेकेंड, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, लेट मी शेयर माई स्क्रीन अगेन। Okay. So next are the customers. Now the customers are those who I am selling goods. So they should be ensured that कि आप आगे जाके भी कंटिन्यू करेंगे बिजनेस में, ठीक है। So they are really interested. Public, the general public, they also have CSR, है ना? Uh, just as a business, you are not just for making profits. You have other responsibilities for the society as well. So in general, as a society, for environment, okay, you have to do uh, social welfare, ठीक है।
So you should not be impacting environment. So all these things should also be uh, also the public would look into. Correct. Next is IFRS 10 that I would be covering in my next session, and we would also be having a short overview of some of the areas of this financial statements. Right, it is a long financial statement, but we are mostly interested in the financial statements only. It has all the business model, and annual reports contains all the business model, their uh, directors' responsibilities, governance part, and everything. So yeah, you can explore this out. Okay. Okay. So yeah, this was it for today. We will meet in our next session. Okay, we will meet in the next session when most probably in the next week. Okay. And if you are liking if you do really think that it is insightful and informative, then you can like this video and subscribe. You can share it to your friends so that they can also learn something new. With the end of this series, I would like if you all can interpret and understand financial statements easily. Okay. So yeah, thank you. This is it.